survey and modern techniques such as the space-based positioning system, that is SBPS. The syllabus for fifth unit is the introduction to construction survey. Okay. Now we all are aware about the survey. We all are aware about the construction survey. Construction survey means क्या? We know the survey. Okay. Survey means क्या करते हैं? To locating the position of. Hello. Okay, ठीक है. So now here the survey which has to be taken during the construction. Construction के time जो survey किया जाता है किस लिए? In order to control the elevation. कि elevation का height कितना होगा? Elevation vertically erected है क्या? Right. To establish a line, we need to control our building in the horizontal dimension as well as in the vertical elevation. So to do that, to control or to limit our dimensions or to fix our dimensions as well as to fix our elevation, we need to go for the survey. Okay. And grade for the buildings, fence and road. Now grade means what? So these are shown on the right hand side the diagram. These are the grades which we are constructing it for the road. Okay, ये road के लिए ऐसे grade डालते हैं या फिर you can see it on the left hand screen. So these are the grades which we constructed it for the building. So ऐसे grade को lay down करना है, grade का height कितना रखना है, so that we are controlling it with the help of survey. Then fence. Okay, fence means compound. जो आपका एरिया है उसको कंपाउंड डालने के लिए we do the survey. Then for the road purpose also we go for the construction survey. Okay. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्वे क्या है आपका? किस लिए करना पड़ता है? क्या ऑब्जेक्टिव है ये सर्वे का? ओके. मींस व्हाट इज द यूज टू डू दिस कंस्ट्रक्शन सर्वे? तो क्या है? Points and the lines are re-established on the ground during the construction work. Re-establish means क्या? पहले अपन ने ग्राउंड का सर्वे करके पेपर पे कंस्ट्रक्ट ड्राइंग बनाया था. Now the same ground survey we are re-establishing it on the ground. Okay. तो ग्राउंड पे पहले सर्वे करके अपन ने पेपर पे सर्वे ड्रॉ किया था. वो सर्वे के बेसिस पे अपन ने सब डिजाइनिंग किया एंड आफ्टर दैट अगेन दैट डिजाइनिंग वी आर एस्टेब्लिशिंग इट अगेन ऑन द ग्राउंड. इसीलिए उसको री-एस्टेब्लिशिंग बोलते हैं. ओके. सो जो कुछ भी पॉइंट्स अपन ने लिए थे, जो कुछ भी लाइंस अपन ने ड्रॉ किए थे, उनको फिर से री-एस्टेब्लिश करना है ग्राउंड के ऊपर. ओके. दिस इज द पर्पस और दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन सर्वे. So grade are re-established on the ground. Then it is also involves in the staking. Staking means that these are the small wooden pegs which you can see it in the diagram. Okay. So जहाँ पे भी cursor move करे, so these wooden pegs are called as a stake. So what is the purpose? I will read out this statement first and then I will explain. It is also involved in a staking out of various details such as a bridge, culvert, then carrying on the other type of surveying which is more essential during a construction. Okay. तो यहाँ आपको क्या करना है? जो कोई भी आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट पड़ता है. स्टेकिंग मीन्स क्या? कि आपने सब डिजाइनिंग पेपर पे कर लिया, उसके बाद उसको आपको साइट पे करना है. तो साइट पे करने के पहले आप क्या करते हो? सो यू आर गोइंग टू insert some pegs on which markings are given कि slope कितना होगा. ये अगर ये पेग मैंने यहाँ इंसर्ट किए तो ये पेग पे मैं पूरा डिटेल्स लिखूंगी कि ये स्लोप मुझे कितना एक्सकवेट करना है या कितना फील करना है. ओके. या फिर यहाँ से कितना स्लोप मुझे कट करना है. वो तो हाउ मच विल बी द h by v. ओके. हॉरिजॉन्टल बाय verticality of this slope that I will going to note down it on my peg. Okay. What will be the width of this road that I will going to mark it on the peg. So these are, you can say ki alert, or these are the some important notes which we have marked on that peg. So that peg we are inserting in our construction site
from which we will come to know that the exact excavation, exact filling, exact slope of our site. तो उसके लिए अपन ये स्टेक इंसर्ट करते हैं. सो ये स्टेक इंसर्ट करने के लिए so it is also involved in a staking out a various details such as a breach, culvert, carrying out. तो ये सब डिटेल अगर आपको स्टेकिंग के जो डिटेल्स है वो कहाँ से पता चलेंगे, आपको आपके कंस्ट्रक्शन सर्वे से पता चलेंगे कि कितना एक्सकवेशन करना है, कितना. देन there are some important surveying operations which are being used for the purpose of construction are as follows. कौन कौन से ऑपरेशन अपन करते हैं. एक तो retracing the center line which is shown on the plan, okay, and referencing the certain points on the curves, okay. so retracing क्या है, अभी ये पद को आपको पता चला. retracing में पहले जो किया था आपने सर्वे कि ये एरिया और this land we are using it for the suppose road construction, so whether it is feasible to go for the road from this land. सो उसके लिए जो सर्वे किया था वहां से जो डेटा अपन ने एक्सकैवेट किया था उससे अपन ने डिजाइनिंग किया. अभी जो डिजाइनिंग किया है वो वापिस आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए उसको रीस्ट्रेस करना पड़ता है. सो दिस रीस्ट्रेसिंग ऑफ सेंटर लाइन which is shown on the plan and referencing the certain points on the curves. तो जो कुछ भी पॉइंट्स है उसको फिर से मार्क करना है ग्राउंड पे कर्व के लिए, कर्व एस्टेब्लिश करने के लिए. सो दिस कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन सर्वे. ओके, दिस इज द operations which we do for in the construction survey. Then checking a benchmark, then and center line level are run over the retrace line. Okay, फिर बेंचमार्क चेक करते हैं. जो कुछ भी अपन ने बेंचमार्क मार्क किया हुआ है ड्राइंग के ऊपर तो वो बेंचमार्क को रीचेक करते हैं. ओके, देन सेंटर लाइन जो अपन ने पेपर पे मार्क किया था तो वो सेंटर लाइन वापिस अपन ग्राउंड के ऊपर रीस्ट्रेस करने के लिए रीस्ट्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन सर्वे. वी आर रीस्ट्रेसिंग दिस, वी आर अगेन जनरेटिंग दैट लाइन ऑन द ग्राउंड. ओके, जो पेपर पे थी पड़ता है. ठीक है, taking elevation at all the station points. then जो कुछ भी स्टेशन पॉइंट है जहां अपन सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि क्लोज ट्रावर्स है तो क्लोज ट्रावर्स के जो कुछ भी स्टेशन 4, 5 जो कुछ भी स्टेशन पॉइंट है, ओके, उनका अपन एलिवेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, why we required elevation to find out the volumes. अगर आपको कटिंग करना है, अगर आपको फिलिंग करना है, so we will find out the elevation of that point again, okay, which we found out already, and through that we did some designing. So we will again check out the elevation of that all the points. So elevation check करने के लिए अपन कंस्ट्रक्शन सर्वे करते हैं, बेंचमार्क चेकिंग के लिए करते हैं, देन रीस्ट्रेसिंग ऑफ सेंटर लाइन के लिए अपन कंस्ट्रक्शन सर्वे करते हैं. ओके, so these are the purpose for which we go for the um, construction survey. Then setting a slope stake and the grade stakes. Now slope stake and the grade stakes. So now stake क्या है ये आपको पता चला. What is stake? So these are the wooden तो वो कटिंग स्टेक में आएगा. अगर आप स्लोप ले डाउन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका स्लोप स्टेक आएगा जिसमें स्लोप का इंफॉर्मेशन मेंशन किया होगा. अगर कौन सा ग्रेड डालना है, कितने हाइट का डालना है, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर आपने आपके वुडन प्लैंक पे मेंशन किया है, सो इट विल बी अ ग्रेड स्टेक. ठीक है, so these stakes are giving the information related to your construction service. Okay, then setting stake for the complete layout of a bridge and the culvert. ठीक है, तो ब्रिज या ब्रिजेस ब्रिज जो अपन यूज करते हैं टू cross the river, to cross the water bodies without a barrier, so that structure we are calling it as a bridge. Okay, so to complete the layout of a bridge we go with the setting of a stakes. ठीक है, तो वो ब्रिज के लिए या फिर कलवर्ट्स के लिए सेम जैसे
वाटर बॉडीज को पास करने के लिए, जैसे कैनाल्स वगैरह होते हैं, वो वाटर बॉडीज को पास करने के लिए वी आर यूजिंग अ कंस्ट्रक्टेड वेज, मीन्स कंक्रीट से बनाए हुए होते हैं, तो या फिर पाइप्स आर देयर, सो दैट आर कॉल्ड एज अ कल्वर्ट्स। सो वो कल्वर्ट्स को सेटिंग स्टेक करना है, मीन्स उसके कि आपके यहाँ फिलिंग करना है या स्लोप कितना प्रोवाइड करना है, सो वो सारे स्टेक्स आपको ब्रिजेस के लिए या कटवर्ट के लिए सेम, जैसे आपने बिल्डिंग के लिए किया था, सेम आपको ब्रिजेस एंड कलवर्ट के लिए करना पड़ता है। देन सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व्स, ठीक है, इस रोड के लिए अपन ने कर्व्स को सीखा है कि अपन सेटिंग आउट कैसे करते हो, तो दैट सेटिंग आउट ऑफ द कर्व्स, देन सेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग, ओके। तो इसके लिए अपन कंस्ट्रक्शन सर्वे करते हैं। अभी सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग दैट वी हैव सीन इट इन द प्रोजेक्ट, इन आवर सर्वे प्रैक्टिकल की सेटिंग आउट अपन कैसे करते हैं, ठीक है। देन रिपोर्टिंग एंड मार्किंग अ फंक्शनेबल changes if any in a line or adjustment in the drainage structure, okay। अगर कुछ चेंजेस ड्राइंग में एंड साइट पे अगर कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन सर्वे, सो वी हैव टू रिपोर्ट इट टुवर्ड्स द higher authorities, so that accordingly the changes are to be taken in the designing as per the changes are marked on the site। तो उसको रिपोर्ट भी करना है और उसको उसका मार्किंग भी आपको करना है, सो दैट, और उसका जो कुछ भी फंक्शन है दैट आल्सो यू हैव टू मेंशन, सो दैट अकॉर्डिंगली द चेंजेस आर to be carried out according to the availability of the data or the availability of the changes as per the drawing, okay। Then the progress reporting, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ता है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मीन्स अगर आपको कुछ 10 मीटर की वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, सो हाउ मच हाइट यू कंस्ट्रक्टेड टिल नाउ एंड whether it is tilted or whether it is vertically erected, so that you have to come to know it from the survey itself। आप सर्वे ही करोगे, ओके। और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट करने के लिए भी आपको सर्वे करना पड़ता है। देन फाइनल एस्टिमेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो एस्टिमेशन करने के लिए भी आपको सर्वे करना है। एस्टिमेशन मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, or not amount, how much quantity of material is required, how much that we will come to know it from the survey। तो वो क्वांटिटी निकालने के लिए भी आपको सर्वे करना पड़ता है, दैट इज व्हाट द एस्टिमेट, ओके। क्वांटिटी या मटेरियल का क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, दैट कम्स अंडर द एस्टिमेट, ओके। कितना कंक्रीट लगा, कितनी ब्रिक्स लगे, कितनी स्टील रेनफोर्समेंट लगा, सो दैट वी विल कम टू नो फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन सर्वे, ठीक है। Now next point is establishing of horizontal and vertical control, ठीक है। Now as already I told you, the construction survey में आपको क्या करना पड़ता है, vertical as well as horizontal control को establish करना पड़ता है, means how much dimensions of that particular structure that you have to maintain that dimension during the construction work, so that is called as a uh, to control the dimensions by vertically as well as horizontally, okay। So here establishing a horizontal control, so horizontal and vertical control are developed to create a framework around which other survey can be adjusted, okay। So एक बार आपका whole to part, we know the principle of survey, that is from whole to part, okay। तो कितने एरिया में आपको काम करना है एंड कितने हाइट में काम करना है, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर डे, फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, yeah, for that particular project, okay। It is according to how accurately you need a data, okay, or how accurately you need to construct that building। अगर आपको बहुत accuracy चाहिए तो for हर day का आप horizontal area and vertical control point mark करोगे। अगर आपका स्ट्रक्चर उतना important नहीं है, so you will go according to week wise or according to your project wise, okay। तो horizontal and vertical controls
आपको पहले डेवलप करने पड़ते हैं, ओके, वो सेट आउट करने पड़ते हैं कि उतने ही एरिया में, सपोज मैंने एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया है, एक मुझे ऊपर अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, सो बिल्डिंग के लिए मेरा साइज सपोज 3/4 है, ओके, room, not, I will not say building but a room. If I want to construct the room which size is 3/4, okay, these are the horizontal control dimensions कि 3 मुझे उसका विड्थ चाहिए एंड 4 मुझे उसका लेंथ चाहिए, ओके। तो ये कंट्रोल मैंने पहले इस्टेब्लिश करूंगी, कैसे करूंगी, रेफरेंस पॉइंट से मैं, रेफरेंस पॉइंट एक कही तो सपोज एक मेरा पेड़ है जो मैंने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है, तो रेफरेंस पॉइंट से मेरा मेरी बिल्डिंग का पहला लाइन कहाँ आएगा, दैट आई विल मार्क, ओके। उसके बाद वहां से 3 मीटर का 4 मीटर लेंथ कहाँ आएगी वो मैं मार्क करूंगी। सिमिलरली दोनों साइड से वर्टिकली 3-3 मीटर कहाँ आएगा वो मैं मार्क करूंगी एंड अकॉर्डिंगली आई एस्टैब्लिश द कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फॉर दैट एरिया, ओके। तो मैंने फिर मेरा एरिया डिसाइड कर लिया। नाउ आफ्टर दैट आर, as here it is mentioned, horizontal and vertical control are developed to create a framework around which अदर सर्वेज कैन बी एडजस्टेड। और फिर उसके बाद वो जो फ्रेमवर्क अपन ने डिसाइड किया उसमें फिर बाकी सर्वे अपन करेंगे। बाकी सर्वे में क्या कि वहाँ कॉलम कितने आएंगे, फिर वो एरिया में 4 कॉलम है तो 4 कॉलम के लिए फिर अपन सर्वे करेंगे कि हर एक कॉलम का लोकेशन कहाँ है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम दैट ट्री, वो ट्री से हर एक कॉलम का लोकेशन कहाँ है उसका सर्वे करके उसको एस्टेब्लिश करेंगे, ओके। सो दैट मीन्स पहले अपन ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, उसके बाद फिर जो कुछ भी इंटरनल जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स थे तो उनका सर्वे करके फिर वो पॉइंट एस्टेब्लिश किए, ठीक है। Now second point, the horizontal controls involves in location of a ground control points. One second, sorry. Horizontal controls involves in location of a ground control point. As already I explained it to you कि जो कुछ भी ground पे control point अपन mark करेंगे through that we can set out the horizontal control. Okay, these ground control points covers the complete area of that कंप्लीट एरिया टू बी सर्वेड। तो वहां से पूरा सर्वे का जो एरिया वो कवर हो जाएगा जो कुछ भी पॉइंट अपन ने हॉरिजॉन्टल पॉइंट एक एस्टेब्लिश किए, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड कैन बी फाउंड आउट बाय हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो कौन सी भी एरिया के अगर आप बाउंड्रीज को सर्वे करना है, बाउंड्रीज या फिर उसकी पेरीमीटर अगर आपको सर्वे करनी है, सो दैट कम्स अंडर द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, ओके। द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फॉर्म्स अ फ्रेम और अ skeleton of a survey of a required terrain for which other details and control can be allocated, ओके। तो एक बार आपका हॉरिजॉन्टल सर्वे जो है वो अगर आपने डिसाइड कर लिया या कंट्रोल आपने डेवलप कर लिया, सो दैट कंट्रोल एरिया वी विल कॉल इट एज अ फ्रेम बोलेंगे, एक स्केलेटन होगा आपके सर्वे का, दिस विल बी अ मेन स्केलेटन होगा, ये आपके सर्वे की फ्रेम होगी, आपके कंस्ट्रक्शन की फ्रेम होगी। और by taking a reference of that frame we can work out with the other details, okay, दैट इज व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो उसको बस उन्होंने पॉइंट्स के फॉर्मेट में यहाँ मेंशन किया है, ओके। See here, the fourth point you can see it on the screen, the working from whole to part. That already I explained you कि working from whole to part means जब अपन horizontal control आपके एरिया का डिसाइड करते हैं, that is what we worked from the whole and then we are surveying the internal part, so that comes under the part, okay. So working from whole to part is the function, is the fundamental principle of surveying. The excessive error which may be accumulated can be prevented by following fundamental principles strictly. Now how the errors get accumulated, if we will not go with the from whole to part, अगर अपना वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं है तो कौन कौन से कैसे कैसे एरर्स एक्यूमुलेट होते हैं, दैट वी हैव सीन इट इन द फर्स्ट यूनिट। नॉट कौन कौन से एरर बट हाउ द एरर गेट accumulated, so that we have seen it in the first unit, okay. So to prevent that error we needed to work from whole to part and that comes under the horizontal control, okay.
The horizontal control consists of a reference mark of a known plan position from which a silent points of the designing structure may be set out. तो silent point में जैसे मैंने आपको बोला था columns are called as a silent point, and the reference marks are the uh, peripheral, or you can say कि size of that particular room will be a uh, plan position or a control position or the horizontal control of that building. Okay, तो वो होगा होल सर्वे, पूरे बिल्डिंग का प्लान या पूरे रूम का प्लान अगर मार्क करेंगे, उसका कंट्रोल डेवलप करेंगे. उसके बाद through that we'll study the silent point of the design structure. वो फिर वो स्टडी करेंगे, मीन्स उसको सेट आउट करेंगे, उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके. For establishing a horizontal control, there are two common methods employed into a surveying work are as follows: triangulation and the traversing. Now you know these two methods. आपको पता है triangulation and traversing method. Okay. Then system of horizontal control. Primary control, that means by triangulation method or a precise traversing, and the secondary control, secondary by traverse or by a transit or by theodolite. तो वहां से अपन हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं बाय अ ट्रायंगुलेशन मेथड और बाय ट्रैवर्सिंग मेथड. ओके. तो अगर आपका पूरा लैंड को बहुत ही बड़ा है, जैसे आपको कैचमेंट एरिया का सर्वे करना है, उसको उसको प्रॉपरली रीएस्टेब्लिश करना है, तो वो केस में यू विल गो विद दिस ट्रायंगुलेशन सर्वे और द प्रिसाइज ट्रैवर्सिंग. या फिर सेकेंडरी कंट्रोल में आप क्या करोगे, एक बार आपने ट्रायंगुलेशन रफ ट्रायंगुलेशन सर्वे कर लिया, देन यू विल गो विद दिस थियोडोलाइट सर्वे इन केस ऑफ secondary control. ठीक है. You can see that in the below mentioned data. So here primary control is done by the method of triangulation and a precise traversing, or only by a triangulation. It is not suitable for a dense wooded country since a triangulation is more expensive and uneconomical. The control point are established on the boundaries of the given area. Area होना चाहिए, area in the primary control. Then the other stations within a primary control towers are fixed to form a secondary control with a less precision. ठीक है. तो secondary the boundaries or the station points we are establishing it with the primary control, and then whatever the points which comes under that boundary, that we are calling it as a secondary control. तो वो थोड़े less precisely अपन उसको सर्वे करते हैं. ठीक है. देन सेकेंडरी, फिर ये सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स में जो अंदर के आ जाएंगे, जो अपने प्राइमरी बाउंड्रीज है उसके अंदर के जो पॉइंट आ जाएंगे, दैट आर द सेकेंडरी कंट्रोल. इट इज डन विद इन द प्राइमरी कंट्रोल. ओके. The secondary control stations are established by running a transmit survey or a tape survey, and the detail can be allocated. Okay. या फिर तो सेकेंडरी सर्वे अपन कैसे करते हैं, एक बार प्राइमरी कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद फिर सेकेंडरी सर्वे करते कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेप वी डू द सर्वे और वी लोकेट द पॉइंट्स. ठीक है. समझ में आया. प्राइमरी सर्वे सेकेंडरी सर्वे समझ में आया आप लोगों को. सी यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. जो फिर ये जो है, these red lines are showing the primary control points. Okay. ये रेड लाइन क्या दिखा रहा है, these are the primary control point through which we set out this blue marked layout plan. Okay. तो ये जो रेफरेंस पॉइंट अपन ने चूज किए थे, वहां से अपन ने सर्वे किया. रेफरेंस पॉइंट कौन से, जो रेड स्पॉट रेड डॉट दिख रहे हैं, दैट आर द रेफरेंस पॉइंट, and from that reference point we surveyed that land. Okay. And we marked it
uh, um,